India is a diverse country where various religions are graciously woven together, creating one of the most beautiful fusions of different cultural identities. Amid all the faiths mixing with one another, Sufism is one of the most important parts of Indian culture that promotes love and unity. Today, we take you to the famous Dargah of Sufi saint Baba Hazrat Alauddin Sabir-e-Pak, which attracts devotees from different walks of life. The Dargah also serves as a beacon of harmony, promoting brotherhood among all visitors. Devotees visit this sacred place to seek solace and divine blessings. Have a look. 40 kilometers away from the enchanting holy town of Haridwar lies this place for spiritual solace, the Dargah of Baba Hazrat Alauddin Sabir-e-Pak. The Dargah is believed to have an aura that connects visitors with their inner essence. People here abandon their religious grudges and embrace each other in togetherness. This place is referred by many as a beacon of brotherhood for everybody. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and people from all other communities are welcomed with open arms, and they all pay their heartfelt tribute to the sacred shrine. The revered Dargah of Baba Hazrat Alauddin Sabir-e-Pak has earned itself the place of most cherished and largest Dargah in India, second only to Ajmer's Khwaja Moinuddin Chishti Garib Nawaz. हिंदुस्तान में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आस्थाना है कि जहाँ पर ज़ायरीनों का आना जाना 24 हावर्स जो है लगा रहता है। हर धर्म के लोग बग़ैर तफरीक मज़हब व मिल्लत हुजूर साबिर-ए-पाक के आस्थाने में हाजिर होते हैं बग़ैर किसी भेदभाव के। जैसे हर धर्म के लोग जा रहे वैसे ही मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई एक साथ एक लाइन में लगकर आस्थाने के अंदर हाजिर होते हैं, अपनी सलाम कदम बोसी सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से अपनी मुरादें मन्नतें मांग कर बाहर निकलते हैं और फिर लंगर खाने का इंतज़ाम है। वहाँ पर दाल और रोटी का लंगर हर धर्म के लिए दाल और रोटी 24 हावर्स हुजूर साबिर-ए-पाक के आस्थाने की तरफ से चलता रहता है। The 13th century old Dargah has an elegant dome-shaped structure with spacious courtyards that are more than often overwhelmed with people who come to seek spiritual guidance and solace. For many, particularly those who live in the close proximity of the Dargah, visiting the site is their preferred choice as they believe that the Dargah cures all their physical and mental illness. They also hold a belief that exorcism performed by priests within the premises of Dargah can also cure those affected by malevolent spirits. 65% जो सिख समुदाय है हमारा वो कलियर शरीफ पहुंचता है, क्योंकि जो हुजूर साबिर-ए-पाक के पीर मुर्शिद हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनका जो ग्रंथ साहिब है सिखिज़म की किताब, उसके अंदर हुजूर बाबा साहब का जो है वो पढ़ा जाता है गुरुवाणी, और जो इसलिए उन लोगों को बाबा साहब से निस्बत है। Apart from being a spiritual haven, Kaliyar Sharif also provides stage to music enthusiasts and singers who perform Qawwali every Thursday evening, also known Jummah night. The soulful melodies of these performances resonate in the hearts of visitors as they come to the shrine to escape the hustle and bustle of everyday life. People from all walks visit the shrine to pay their respects by bowing their heads, offering flowers and laying chadars at the grave of the holy saint and praying for their own well-being. सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह है और यहाँ पे लगभग सभी मजहब और सभी देश विदेश से भी लोग आते हैं। सबका अकीदा है, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी तकलीफ हो, जिस्मानी हो या कोई हवाएं होती हैं ओपरा वगैरह या भूत प्रेत, वो लोग भी आते हैं जिनकी यहाँ से इस दरबार के क्षेत्र में आते ही पकड़ हो जाती है, यानी कि उस चीज़ पे शिकंजा लग जाता है जिससे कि वो उसे परेशान नहीं करते। मेन चीज़ ये है कि अपना विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ है और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। For centuries, Sufi architecture has always served as a symbol of communal harmony, nurturing an enduring connection
among diverse communities and promoting a sense of brotherhood in society.